Good morning and welcome to the lecture series of Mathematical Modeling of Manufacturing Processes. It is a departmental elective subject and its code is KME 073. I am Dr. Suman Gotwal, working as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So, the today lecture is about the introduction to the subject. So, these will be the outlines of today's lecture. First of all, I will discuss the syllabus, then I will come to the course outcomes, then we will discuss about the evaluation scheme, and at last the books and references will be discussed. So, if we talk about the syllabus, it will cover the 5 units, okay. And in unit 1, first of all we have the introduction to manufacturing processes. So, for this first of all we should know that what is manufacturing. So, manufacturing is the way to convert the raw material into the final product, and the different methods which are used for this conversion is known as the processes. So, this is the manufacturing processes. Now, we come to the material processing. So, material processing is same, whatever material we are using, how we will process it step by step to convert into the final shape. So, we will discuss the material processing. So, a number of material processing techniques are available that are used. We can have the industrial processing also, where we use the chemical and the mechanical procedures to produce the large quantity or the batches. Then we have the types and properties of the engineering materials. So, we use the different types of engineering materials, like we can have the metals and non-metals, which is the basic classification of the engineering materials. We can use, in case of the metals, we can have the ferrous and the non-ferrous materials. Then we can classify on the basis of the alloys also, which is the composition of the 2 or more metals. So, different type of material will be discussed under this, and then the properties which are needed in the engineering materials will be discussed. So, कौन सी properties आप देखेंगे, like strength, okay, and in the strength you will look for the tensile strength, compressive strength, yield strength, okay, then compress and hardness, okay, and आप जो है आपका properties में और क्या आ जाएगा, resilience है, creep है, fatigue है, toughness है, all these are the properties of the engineering material. So, depending on our requirement we will select the type of the engineering material. Now, after that we will discuss about the evaluation of properties of the manufacturing products. कि आपने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर तो कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे इवेलुएट करेंगे. सो देयर आर सम टेस्ट टू इवेलुएट दीज प्रॉपर्टीज़, okay, like we perform the tensile test which is performed on the UTM, universal testing machine. Then we may have the compressive test, okay, and then we have the hardness test, okay, Charpy test, and then we can have the Vickers test, Brinell test, okay. Number of tests are performed to check the properties of the materials. So, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जिस पर्पज़ के लिए आपका प्रोडक्ट बनाया गया, क्या वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उस प्रोडक्ट में या नहीं. सो यहाँ पे हम जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे. Then we have the statistical and data driven modeling approach and the overview of mathematical modeling. So, first of all for this we have to understand what is the mathematical modeling. So, modeling क्या होती है basically, it is the way to represent something, कि आप कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या आता है कि आप जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट आर वी सपोज टू रिप्रेजेंट.
आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या आप नेचर और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जो है एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज द मैथमेटिकल मॉडल। क्लियर? देन व्हाट आर द वेज टू रिप्रेजेंट? Okay, there are different ways to represent something. For example, if we are having the verbal argument, okay, or we are drawing the we are drawing to represent something, okay, or we are representing it with the help of the physical structure, or we are representing something with the help of the mathematical formulas. क्लियर? तो ये जो है डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है आपकी किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, एंड द स्ट्रक्चर which will obtained will be known as the mathematical model. Okay, so here we will discuss about the overview of the mathematical modeling. Clear? After that we come to the statistical and the data driven modeling approach. So in case of the statistical and data driven modeling approach, if we talk about the data driven modeling approach, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास डेटा है, दैट इज़ द इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा जो भी अवेलेबल है उसके बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दीज data on each other. Okay, so we will build a relationship between those data in the data driven modeling approach. For example, जैसे आपने रिग्रेशन मॉडल में देखा होगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आप देखते हो कि कैसे वो रिलेटेड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. Okay, so it is the example of the data driven modeling. Okay, in case of the statistical, it is based on the statistics. Okay, for example, language modeling. Language modeling is the use of various statistical and the probabilistic techniques, and it is used to determine that the probability of a given sequence of words in a सेंटेंस, कि कितनी बार एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर कितनी बार एक सीक्वेंस जो है वर्ड्स की, वो उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें आने की क्या है, दैट इज़ दी बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स. सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हेन वी विल कवर द यूनिट, दिस यूनिट. देन टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स means we will classify the mathematical model. So we have the different types of mathematical model, like we can have the linear and non-linear mathematical model, we can have the continuous or discrete model, we can have the statistic or dynamic model, then discontinuous or deterministic and the stochastic modeling approach, autonomous and non-autonomous. So this is the classification of the mathematical modeling. Then we will see the method to solve the same. So different methods are used to solve these problems, like we can have the forward modeling, we can have the inverse modeling, we can have the mixed modeling. These are the method, or the mathematical techniques which are used are the computer simulation we can use. Okay, and then we can use the classical modeling, then we can use the stochastic approach also. So these are the techniques which will be used to solve the mathematical problems. Then we come to the physics of manufacturing processes. Okay, and here we will study about the solid state deformation, elasticity and the plasticity. ठीक है, तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी हमने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम स्टडी करते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, लाइक दिस, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया जाता है, एक तो पर्टिकुलर लिमिट तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट लिमिट इज़ नोन एज द हुक्स लॉ. ठीक है, अब इलास्टिसिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो है लोड को रिमूव कर देंगे तो मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप.
क्लियर। लेकिन प्लास्टिसिटी की अगर आप बात करते हैं तो इट विल बी परमानेंट इन नेचर, द डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट इन नेचर, कि अगर जो है आपने लोड को रिमूव कर दिया फिर भी आपका जो मटेरियल है दैट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्लियर। एंड बिफोर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द मटेरियल विल गो टू द इलास्टिक इलास्टिक फॉर्म, पहले वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एंड देन तो जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, दैट वी विल स्टडी ड्यूरिंग द सॉलिड स्टेट डिफॉर्मेशन। देन रेजिडुअल स्ट्रेसेस, सो जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो एज वी ऑल नो दैट द रेजिडुअल स्ट्रेसेस विल बी इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, क्लियर। देन सॉलिड स्टेट फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, जब आपका मटेरियल डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, आपके क्रिस्टल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, न्यू क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी, तो दैट वी विल स्टडी हेयर। देन मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन एंड कपल्ड सिस्टम, सो कपल्ड सिस्टम क्या होता है आपका, द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल हाउ योर mechanical, thermal, metallurgical and the these system or how these system are connected to each other. So, we will study this in the coupled system. So, this is about the unit 1 we are going to discuss. Then we come to the unit 2, that is the conventional machining and the non-conventional machining. सो सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल मशीनिंग क्या है और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्या है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग लाइक your turning, facing, milling, all these are the example of conventional machining process. So एक basic difference की अगर आप बात करते हैं तो basic difference क्या है कि here the tool and the workpiece will always be in contact, clear. But in this case it is also known as the non-traditional machining process. So इसके अंदर क्या होगा कि you will maintain a certain gap between the tool and the workpiece and you will use different energy sources like which may be the chemical energy source, thermal or the electrical or the combination of these to remove the material here. Okay. So, in case of the conventional machining we will study about the orthogonal cutting. So, as we know कि आपके पास दो तरह की कटिंग होती है, वन इज़ ऑर्थोगोनल एंड द सेकंड वन इज़ द ओब्लिक कटिंग, ठीक है। ऑर्थोगोनल ओब्लिक कटिंग जो है आपकी दैट इज़ 3 डायमेंशनल इन नेचर, 3 डायमेंशनल होती है बट इट इज़ द 2 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल कटिंग इज़ ईजी फॉर द एनालिसिस पर्पज। सो ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टूल ज्योमेट्री. Okay, the tool geometry, like we have different types of tools, single point cutting tool, multi point cutting tool. Okay, so we are going to discuss here. So अगर आप example लें कि turning operation है तो आपने देखा होगा कि उसमें tool जो है will always be in contact with the workpiece. Okay, this is the workpiece and tool will be always be in contact. But turning के केस में अगर आपने देखा हो तो only एक single point जो है वो आपका tool के contact में होगा, that is known as the single point cutting tool. But if we take the example of the milling cutter is like this and here the teeth are on the outer periphery and it will rotate and here you will have the workpiece. So all these cutting edges will come in contact with the workpiece. So it is a multi-point cutter tool. Okay. So we will discuss the tool geometry and we will focus on the single point cutting tool. Clear? Then we will discuss the chip formation. Okay. So there are different types of chip and we will discuss the mechanism of chip formation also here. And then we will discuss about the different force components, means different force are involved when during the cutting operation. Okay, like we have the cutting force, we have the shear force, we have the friction force. Okay, and other 3 forces will be the force which is normal to the friction force, force which is normal to the shear force and force which will be normal to the
cutting force. So, all 6 forces we will consider and we will analyze these with the help of the Merchant circle. Clear? Then heat generation. So, how the heat will be produced during the machining process. Okay. Almost 75% of heat will be produced along the shear plane, or we can say the primary deformation zone. 20% of heat will be produced along the friction or the secondary deformation zone, and the last 5% will be produced at the tertiary deformation zone, that will be near the machine surface, workpiece surface. Clear? So, how the heat generation will takes place, we will discuss in detail. Then tool life. So, what is tool life? Tool life is basically the useful life of a tool before failure. ठीक है, एंड हम जो है डिफरेंट स्पेसिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं टूल को. कैसे टूल को स्पेसिफाई करेंगे कि इसने जो है फेलियर से पहले कितने अमाउंट में मटेरियल को, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इसने रिमूव किया बिफोर फेलियर, या फिर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसने प्रोड्यूस किए. ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं. टेलर टूल लाइफ इक्वेशन वी विल स्टडी इन. Okay. Then we will see mathematical modeling approach. So, I have told you, I have discussed it in the previous slide also, that we have different mathematical modeling approach, forward modeling approach, then the inverse modeling approach, mixed modeling approach, okay, and the solution of the problems, okay, and how we will solve the mathematical problems. Then we will discuss about the introduction to the discrete, time, linear and non-linear models. So, we have discussed that there are different types of mathematical models like the continuous or discontinuous, linear, non-linear, discrete, continuous. So, these are the we will discuss in detail during the unit 2. Then we come to the non-conventional machines. So, example of non-conventional machining is basically the AJM, that is the abrasive jet machining, or USM, that is the ultrasonic machining. So, these are the example of the non-conventional machining. So, in this topic we will discuss about the principle and mechanism of different processes. Okay. So, EDM, ECM, all these are the non-conventional machining. So, एक क्वेश्चन जो आता है कि जब आपके पास कन्वेंशनल मशीनिंग है तो आपको नॉन कन्वेंशनल की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सो कुछ मटेरियल होते हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू मशीन, या फिर हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो वे विल गो फॉर दी नॉन कन्वेंशनल, कि बिकॉज आपकी कन्वेंशनल में क्या होगा, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड हेयर, सो इट विल बिकम कॉस्टली. Okay. So, we will go for the non-conventional in that case. Then we will do the analysis of the heat transfer, how the heat is transferring, okay, and then material remover and the surface finish. So, these will be the topic of discussion during the unit 2. Then we come to the unit 3, that is the metal forming and the welding. So, forming process, what is forming process? Forming process, in this process basically we will apply the load, we will apply the external pressure on a heated material to give its final shape and size. So, प्लास्टिकली डिफॉर्म करके आप जो है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे उसको शेप और साइज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बिफोर द फॉर्मिंग एंड आफ्टर द फॉर्मिंग विल बी सेम. Clear? So, we will study about the mechanics of different metal forming processes. Clear? तो एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मिंग प्रोसेस का क्या आ जाता है, लाइक वी कैन हैव द एक्सट्रूजन प्रोसेस, वी कैन हैव द रोलिंग प्रोसेस, वी कैन हैव द शीट मेटल प्रोसेस, वी कैन हैव द forging process. So, all these are the metal forming processes. Then mechanics of sheet metal forming, heat transfer and the deformation, how the heat will be transferred, how the deformation will takes place, all we are going to discuss under the metal forming. Then we come to the welding. So, welding is basically a joining process. So, it is the art of joining two similar or dissimilar materials. ठीक है.
तो यहाँ पे जो है हमारे पास फ्यूज़न वेल्डिंग है, तो आपके पास दो तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ दी फ्यूज़न welding process and the second one is the pressure welding process. So in case of the fusion welding, basically you are heating both the materials and so that a sort of pool of molten metal will be formed, and on depending on the requirement you can use the filler rod or not, and then after the solidification weld will be formed. So you will heat the material to its fusion temperature here, but in case of the pressure welding you will apply the pressure, you will not heat the material like the resistance welding. And the example of this fusion welding जैसे कि arc welding हो गई, आपके पास gas welding हो गई, all these are the fusion welding. Okay, then welding heat source modeling. तो वेल्डिंग हीट सोर्स जो है उनकी आप मॉडलिंग कैसे करेंगे, उनके बीच को, उनके पैरामीटर्स को कैसे रिलेट करना है. ओके, सो वी विल सी हियर. देन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक्स प्लेस, इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिव एलिमेंट्स, मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफ़र इन वेल्डिंग. मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफ़र जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं इन द GMAW. GMAW is the gas metal arc welding, or we say it MIG welding also. So आपके जो है डिफरेंट मोड्स मेटल ट्रांसफ़र मोड्स होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, लाइक मेटल ट्रांसफ़र मोड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक देयर कैन बी द शॉर्ट सर्किट, देयर कैन बी द ड्रॉप metal transfer, there can be the spray transfer, pulse transfer, rotary transfer. So these are the different modes of metal transfer from the electrode to the workpiece. So we will study in details during this topic. Solid state welding, okay, here जो है तो fusion, we will not heat the material to the its fusion temperature. Okay, so we will have the solid, we will discuss about the solid state welding also. Then we will see the solidification and microstructure, कि सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या, कि कौन से आपके रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है इंड्यूस हो गए हैं, क्योंकि जब आप वेल्डिंग करेंगे तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो वर्क पीस में इंड्यूस्ड हो जाएंगे. देन डिस्टोर्शन, ठीक है, what will be the distortion. So all these topics will be discussed during unit 3. Then unit 4, कास्टिंग एंड पाउडर मेटलर्जी. सो कास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जो है एक कैविटी को क्रिएट करते हैं, एंड दैट कैन बी द मेटल कास्टिंग और द सैंड कास्टिंग डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. सो सबसे पहले आपने कैविटी क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न, एंड देन यू विल पोर द मोल्टन मेटल with the help of the sprue, runner and gates, and after that you will allow it to solidify, and after solidification you will remove your casting from the cavity. ठीक है, तो this will be the casting process. So different casting processes we will study here, and then we will discuss the powder metallurgy. So powder metallurgy क्या है, पाउडर मेटलर्जी बेसिकली मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर के डिफरेंट फेजेस में आप इसको यूज़ करेंगे. सबसे पहले आपको जनरेट करना होगा या प्रोड्यूस करना होगा पाउडर मेटल. ठीक है, पाउडर मेटल जो है करने के बाद आपको कॉम्पैक्टिंग एंड शेपिंग करनी है उसकी पाउडर की, एंड देन द कंसोलिडेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द पाउडर इनटू द सॉलिड मेटल कंपोनेंट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी done. So these are the stages or the phases of the powder metallurgy. Clear? So in the, under this casting and powder metallurgy we will study about the cooling and solidification, the principle of powder metallurgy, coating and additive manufacturing. Additive manufacturing is like the 3D printing, means where we will get the physical model with the help of addition of the layer by layer. Principle of surface and coating techniques, principle and development of the additive manufacturing technologies. Clear? And last unit and unit 5, here we will discuss about the heat treatment process. So heat treatment process are basically in heat treatment process we heat the material below its melting point, and then we cool it in a controlled way. Okay, so to induce the various properties, like we will induce the resistance to the abrasion, we will introduce the more ductility, more hardness. Okay, so these type of properties will be induced here. So in this
topic, we will study about the fundamentals of the heat treatment, evaluation of microstructure properties, residual stress of different manufacturing processes. So, all these we will study under the heat treatment. Then micro and nano scaling manufacturing. So, अभी हम लोग ने जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डिस्कस किया, बट हेयर वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड nano manufacturing processes. So, under this we will study about the downscaling of conventional manufacturing processes, changes of properties, micro to nano manufacturing कि micro से आप nano manufacturing पे कैसे आएंगे, then packaging, finishing, micro joining, nano joining, micro casting, micro forming, micro machining. Micro level पे we will analyze these process. Then last we will discuss about the processing of the non metallic material कि non metallic material की processing कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे principle of plastic processing and shaping of plastics. So, here जो है we will discuss about the plastics, ceramics, glass etc. So, then we will discuss about the processing of non metallic biomaterials, principle of glass and ceramic processing and shaping of glass and ceramics. So, all these will be covered in this subject. These are the course outcomes, means after the completion of this course the student will be able to understand the fundamentals of the manufacturing processes, clear, mathematical model and their solution, then conventional and unconventional machining, discrete time linear and non-linear models and solutions, principle of casting, powder metallurgy, coating and additive manufacturing, mechanism of heat and mass transfer in welding, evaluate micro properties and residual stresses of the different manufacturing processes. Okay, these will be the course outcome. This is the evaluation scheme, it is the department elective subject. So, we can see here the internal sessional is 50 marks and the end semester exam is 100 marks and the subject credit are 3. And these are the books and references. So, you can go for the Ghosh and Malik of manufacturing sciences. This is a good book and it covers almost 70 or 80% of the syllabus. And after the mathematical modeling, for the mathematical modeling you can refer these books like J. N. Kapoor mathematical modeling in biology and medicine, and then for additive manufacturing materials processes you can go for the Zhang and Hyun Gil Jung, and for micro manufacturing engineering and technology you can refer this one, and this is for the advanced manufacturing. This is for the principle of welding, micro joining and nano joining. So, you can opt these books for these subjects. So, that is all for this subject. Thank you so much.